ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं सतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। Thank you everyone for joining. So, has anyone here heard of Brihad Bhagavatamrita before? किसी को किसी ने सुना है कि बृहद भागवतामृत कौन सी बुक है या किसी के पास है वो बुक? नहीं माता जी। अच्छा, ओके, ठीक है। सो दिस इज बृहद भागवतामृत, ये है, एंड दिस इज द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है। So let me give you a little background on this book. Navya, can you sit somewhere else? It's echoing a little lot if you sit there. Sit in the living room. So let me give you a little background, okay? And ये थोड़ा सा टेक्निकल बात है, and Nirmala Mataji, I'm going to mute you because there's a lot of disturbance. Please stay muted unless you're sharing something. Okay. So I'm going to tell you a little bit of how Brihad Bhagavatamrita came about, okay? तो बृहद भागवतामृत हमारे लिए तो लिखी है सनातन गोस्वामी ने, ओके? ये सनातन गोस्वामी का ग्रंथ है। लेकिन ऑफ कोर्स सनातन गोस्वामी ने तो किसी स्क्रिप्चर से लिखी है ना, पुराने किसी स्क्रिप्चर से। तो ये कहाँ से आई उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है? एंड लेट्स सी, अगर आप थोड़ा गेस कर सकते हैं कुछ चीजें, ट्राई, ये थोड़ा क्योंकि टेक्निकल है कि क्या हुआ। तो आप सबको पता है कि जैसे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुनी, है ना? ये तो आप सबको पता है। अब आपको पता है कि उनके पास 7 दिन का टाइम था और 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होने वाली थी, क्योंकि जो वो था तक्षक था, स्नेक बर्ड, वो उनको आके मारने वाला था, है ना? उसने उनकी ये कर्स थी उनके ऊपर, जो श्रृंगी ने कर्स दी थी कि ये तक्षक स्नेक बर्ड मारेगा परीक्षित महाराज को। अब जब परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवतम सुन ली सुखदेव गोस्वामी से, ऐसा नहीं कि एकदम से ही तक्षक आ गया था। उसके बाद वो गए मेडिटेशन में बैठे जाके, तो ट्रांस में बिल्कुल, ही वेंट टू गंगा एंड सैट देयर इन ट्रांस वेटिंग फॉर तक्षक टू कम। तो बिल्कुल मेडिटेशन में, समाधि में बैठ गए एक तरह से। अब जब वो गंगा जा रहे थे तो रास्ते में उनको उनकी मदर मिली, ठीक है? क्योंकि मदर को भी पता है कि मेरे पुत्र की मृत्यु होने वाली है, तो वो आके उनको लास्ट फाइनल गुड बाइज बोलने आई। उनकी मदर कौन है? परीक्षित महाराज की मदर कौन हुई? यस माता जी, आप प्लीज शेयर। उत्तरा। यस, उत्तरा, राइट। सो उत्तरा जो है, उन्होंने परीक्षित से, अपने पुत्र से पूछा। अब ऑफ कोर्स वो काफी डिप्रेस्ड थी, डिजेक्टेड थी, क्योंकि उनके पुत्र की मृत्यु होने वाली है और उसका कुछ कर नहीं सकते। बट दीज पीपल यूज्ड टू बी वेरी स्पिरिचुअली एडवांस्ड।
तो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था, जैसे परीक्षित महाराज ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो एक ये कर्ज तो हमने टॉलरेट करेंगे हम, एंड यू नो वी विल अपहोल्ड दिस ब्राह्मणास कर्स। तो अगर मृत्यु 7 दिन में आनी है तो आनी है, क्या कर सकते हैं। सो उत्तरा वाज नॉट रियली लेमेंटिंग अबाउट इट, बट शी आस्क्ड परीक्षित कि तुमने 7 दिन तक सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनी पर मैं नहीं सुन पाई, तो मुझे बताओ, मुझे कुछ सार बताओ, मुझे बताओ कि तुमने क्या सुना। ओके जो अब वो जो कॉन्वर्सेशन थी, अब परीक्षित महाराज ने बोला उत्तरा को कि देखो मैं तुम्हें सारा कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत हमारी तो 7 दिन तक डे एंड नाइट इतना कुछ बताया मुझे सुखदेव गोस्वामी ने, और मेरे पास टाइम बहुत कम है। सो मदर, मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको एक उसका कंडेंस्ड एक वो वर्जन दूंगा। ऐसा नहीं कि उसका उसका सार नहीं है ये, उसका ऐसा नहीं कि उसकी समरी है ये श्रीमद् भागवतम की, लेकिन मैं आपको कुछ बताऊंगा जिससे आपको वही बेनिफिट मिलेगा जो श्रीमद् भागवतम सुनने से मिलता है। वो जो कॉन्वर्सेशन थी परीक्षित महाराज की और उत्तरा की, दैट कॉन्वर्सेशन इज कॉल्ड बृहद भागवतामृत। ठीक है, उसको बृहद भागवतामृत बोलते हैं, जो ये बुक है। ठीक है, ये बुक अब ये 3 पार्ट्स में है जो हमारे आचार्य ने हमको दिए हैं। सनातन गोस्वामी के वो भी फर्दर ट्रांसलेट करके प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने हमको दी है ये बुक। लेकिन ये दिस इज नॉट व्हाट सनातन गोस्वामी रोट अबाउट। यू नो दैट दीज थिंग्स आर स्पोकन मल्टीपल टाइम्स, है ना। जैसे भागवतम भी कई बार बोली गई, इस तरीके से ये कॉन्वर्सेशन भी कई बार बोली गई। अब ये कॉन्वर्सेशन तो थी परीक्षित और उत्तरा के बीच में। डज एनीवन नो परीक्षित के पुत्र का क्या नाम था? परीक्षित के बेटे का क्या नाम था? ये भी भागवतम में आता है। तो परीक्षित के बेटे का नाम था जन्मेजय। जन्मेजय, ओके, जन्मेजय। जो जन्मेजय था, ही वॉज वेरी अपसेट कि मेरे फादर को ये स्नेक मारेगा। सो आफ्टर दैट ही वॉज डूइंग दिस यज्ञ। वो उन्होंने एक यज्ञ करना शुरू किया कि मैं इस दुनिया के सारे स्नेक्स को खत्म कर दूंगा, मैं सारे स्नेक्स को मिटा दूंगा। ये एक यज्ञ जन्मेजय ने शुरू किया। तब वहां पर एक बहुत बड़े सेंट आए जिनका नाम था वैशंपायन। ओके, वैशंपायन ने आके उनको पैसिफाई करने के लिए कहा कि देखो मैं तुम्हें कुछ हरि कथा तुम्हें कुछ सुनाता हूँ, ठीक है, उससे हो सकता है कि तुम ठीक हो जाओ, क्योंकि it is not appropriate to kill all the snakes of this world. Haribol, is that Ramesh Prabhu? Yes, Mataji. Hari Bol, Hare Krishna. Okay, I just wanted to check कि हम थोड़ा हिंदी में कर रहे थे, तो I think that should be okay with you. Yeah, that should be fine. We understand Hindi. तो मैंने अभी तक बस इतना ही बताया कि बृहद भागवतामृत क्या है। बृहद भागवतामृत इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन परीक्षित महाराज एंड हिज मदर उत्तरा आफ्टर परीक्षित महाराज हैड फिनिश्ड हियरिंग श्रीमद् भागवतम। तो अब मैं अगली बात बता रही हूँ कि जन्मेजया जो परीक्षित महाराज के पुत्र हैं, उन्होंने ये यज्ञ शुरू किया था जिसमें वो सभी दुनिया के सभी स्नेक्स को मारना चाहते थे। तब वहां पर एक वैशंपायना ऋषि नाम के व्यक्ति आए, उन्होंने जन्मेजय को पैसिफाई करने के लिए उनको सुनाया। क्या सुनाया? कोई गेस कर सकता है क्या सुनाया? उनको सुनाया महाभारत। ठीक है, उनको सुनाया महाभारत। ये जो कॉन्वर्सेशन है जो जन्मेजय, और ये थोड़ी सी इसलिए मैं टेक्निकल बात है, इसलिए अगर आपको किसी को लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, किसने किसको क्या बताया। जन्मेजय ने जो वैशंपायना से सुना, दैट वाज महाभारत। ये महाभारत, ये कॉन्वर्सेशन जो है, ये व्यासदेव ने लिखी थी। जब व्यासदेव ने महाभारत लिखी है, तो व्यासदेव ने ये कॉन्वर्सेशन लिखी है। ओके, दिस वाज रिकाउंटेड बाय व्यासदेव। अब जब ये कॉन्वर्सेशन हो गई, जब भी कोई इस तरीके की कहानी सुनाई जाती है, महाभारत जैसी, खासकर इतनी ज्यादा ट्रैजिक कहानी, तो ऐसा बोलते हैं स्क्रिप्चर्स में कि ऑलवेज द स्टोरी शुड एंड विद समथिंग वेरी स्वीट। इसको बोलते हैं मधुरेना समाप्यता। मधुर चीज से समाप्ति होनी चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं ना, एंड में हम हमेशा डिजर्ट खाते हैं, एंड में हमेशा मधुर चीज खाई जाती है, थोड़ी सी छोटी चीज होती है, वो उतनी लंबी नहीं होती, उतनी बड़ी नहीं होती, उसकी क्वांटिटी कम होती है, पर मधुर होती है, बहुत स्वीट। तो क्योंकि महाभारत इतनी ट्रैजिक, इतनी इस तरीके की स्टोरी है, तो इसके एंड में इसको मधुर तरीके से खत्म करने के लिए एक अपेंडिक्स दिया,
Vaishampayana ne. He gave more supplementary reading, मतलब supplementary hearing of some sweet narration, and that was more detailed pastimes of Krishna. तो उन्होंने कृष्णा के और detailed pastimes दिए. उसको उस अपेंडिक्स को बोलते हैं हरिवंशा. उसको बोलते हैं हरिवंशा. So everybody is following. महाभारत सुनाई वैशंपायन ने जन्मेजय को, और महाभारत के एंड में उन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज सुनाई जो कृष्णा के ज्यादा डिटेल्ड पास्ट टाइम्स हैं, इवन मोर डिटेल्ड देन व्हाट श्रीमद् भागवतम गिव्स, एंड दैट इज कॉल्ड हरिवंशा. हरिवंशा बेसिकली मींस हरि का वंश, मतलब जब कृष्णा के आगे की जनरेशंस में क्या क्या हुआ, उनके इंटीमेट पास्ट टाइम्स. अब जन्मेजय जो थे वो ऑफ कोर्स परीक्षित महाराज के बाद राजा बने हुए हैं, है ना. तो ही इज वेरी वेरी एडवांस्ड पर्सनालिटी, वेरी वंडरफुल डिवोटी. उन्होंने एक बार महाभारत तो सुन ली वैशंपायना से, बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड. ही वांटेड टू हियर अगेन. जैसे होता है ना, हम बार बार कई लोगों से एक ही चीज सुनते हैं. जैसे अभी मैं आपको ये कहानी आज सुना रही हूँ, लेकिन हो सकता है आप फिर एक महीने बाद ये कहानी कहीं और से सुनो. तो हम अलग अलग सुनते हैं. तो एक बार यही जन्मेजय ने, जब जैमिनी ऋषि आए तो उन्होंने कहा मुझे जैमिनी ऋषि से भी सुननी है महाभारत. मुझे वैशंपायना की महाभारत बहुत अच्छी लगी थी, अब मैं जैमिनी ऋषि से भी महाभारत सुनना चाहता हूँ. तो फिर जन्मेजय ने एट अ लेटर टाइम जैमिनी ऋषि से भी महाभारत सुनी. ठीक है. अब महाभारत सुनेंगे तो एंड में क्या सुनना होगा? मधुरेना समाप्यता, समथिंग स्वीट, सम अपेंडिक्स टू दैट स्टोरी ऑफ महाभारत. तो सब अलग अलग स्वीट चीज सुनाते हैं. ठीक है. ऐसा नहीं कि सब हर कोई सेम ही चीज सुनाएगा. वैशंपायना ने हरिवंशा सुनाया था एज दैट स्वीट अपेंडिक्स. जैमिनी ऋषि जो हैं उन्होंने एज समथिंग स्वीट क्या सुनाया? उन्होंने जो सुनाया दैट वाज बृहद भागवतामृत. तो उन्होंने जन्मेजय को बोला कि तुम्हारे पिता परीक्षित ने तुम्हारी ग्रैंडमा उत्तरा को एक बात सुनाई थी, उस कॉन्वर्सेशन को बोलते हैं बृहद भागवतामृत. वो इतनी स्वीट थी कि आई विल यूज दैट एज एन अपेंडिक्स टू दिस महाभारत. ठीक है. वो मैं तुमको सुनाता हूँ. तो अब पहले बृहद भागवतामृत हुई जो ओरिजिनल थी, दैट वाज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन परीक्षित एंड हिज मदर उत्तरा. एंड नाउ second time the Brihad Bhagavatamrit is the conversation between Gemini Rishi and Janmejaya as a supplement to Mahabharata. In the end of Mahabharata, he again told Brihad Bhagavatamrit. Okay. तो जैमिनी ऋषि ने बताया कि जब परीक्षित उत्तरा से को ये बता रहे थे तो मैं वहीं पर था, क्योंकि वहां पे और भी सेजेस थे जो अभी सुखदेव गोस्वामी की भागवतम सुन के उठे थे. उनमें से कुछ सेजेस रह गए थे वहां पर. उनमें से एक थे जैमिनी. तो जब परीक्षित उत्तरा से बात कर रहे थे तो जैमिनी भी वहीं पे थे. तो जैमिनी ने कहा मैंने भी बृहद भागवतामृत सुनी है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ. This conversation between Gemini Rishi and Janmejaya is what Sanatan Goswami wrote down 500 years back. Okay? तो उन्होंने परीक्षित और उत्तरा की कॉन्वर्सेशन को नहीं लिखा, क्योंकि हर व्यक्ति जब कुछ नरेट करता है तो उसका थोड़ा डिफरेंट स्टाइल रहता है ना, डिफरेंट तरह की वर्सेस में बोलेगा वो. तो जो जेमिनी ने नरेट की थी जन्मेजय को, क्योंकि ये सनातन गोस्वामी खुद बताते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ बृहद भागवतामृत कि मुझे जेमिनी ऋषि से ये रिवील हुई है इन माय स्पिरिचुअल विजन. दिस बृहद भागवतामृत हैज बीन रिवील्ड टू मी. द कॉन्वर्सेशन बिटवीन जेमिनी ऋषि एंड जन्मेजय हैज बीन रिवील्ड टू मी. तो उन्होंने ये बृहद भागवतामृत दी जेमिनी ऋषि ने. और हमें किसने दी है बृहद भागवतामृत? हमें दी है प्रभुपाद के डिसाइपल ने. उनको प्रभुपाद के डिसाइपल हैं. सो देयर वर 3 वंडरफुल डिसाइपल्स ऑफ प्रभुपाद. एज यू नो, व्हेन प्रभुपाद लेफ्ट, when Prabhupada left, the task came on to his disciples to translate rest of the Srimad Bhagavatam, the remaining 10th canto, 11th canto and 12th canto. That was further translated by Prabhupada's disciples. One of those disciples is very famous. His name is Gopi Prandhan Das. तो उनकी पिक्चर है इस बुक के एंड में, गोपी प्रांधन दास. इन्होंने ये he has, I'll switch to English now. He has translated Sanatan Goswami's Brihad Bhagavatamrit into English. Okay, so this is the 3-volume Brihad Bhagavatamrit that is available to us. So thank you everyone for joining. Hare Krishna, Nagarchand Prabhu, my mom and dad, and Nirmala Mataji, Shravani Mataji. So we were just discussing so far, very quickly we discussed how Brihad Bhagavatamrit came into being.
And we discussed that Brihad Bhagavatamrit was originally a conversation between Parikshit Maharaj and Uttara after Parikshit Maharaj had finished hearing Srimad Bhagavatam. And second time, this Brihad Bhagavatamrit was a conversation between Gemini Rishi and Janmejaya, the son of Parikshit Maharaj. And this was Brihad Bhagavatamrit was told as an appendix of supplementary reading of Mahabharata. Now, Brihad Bhagavatamrit has two parts, two main stories. Part 1, Part 2. We will read Part 2 story today. Part 1 story, many of you may be familiar because I have covered that story a couple of times in the past. Part 1 story was the search, the quest of Narad Muni to find the best devotee of Lord Hari. Okay, who is the topmost recipient of Krishna's mercy? Krishna Kripa Patra kaun hai? So who is the topmost recipient of Krishna's mercy? And if you remember, that journey led Narad Muni on a big quest. He went from, he saw a small Brahmana, then Brahmana said, no, I'm not the recipient of Krishna's mercy, go to that king. King said, no, go to Indra. Indra said, no, go to Brahmaji. Brahmaji said, go to Shivji. If you remember, that's how that story went. And ultimately we reached, Mathura, Dwarka, Vrindavan. There were Yashoda Maya Nand Maharaj who said, no, go to Gopis, or Gopas. Gopa said, go to Gopis. And Braj Gopis finally said that Radharani is the topmost recipient of Krishna's mercy. You remember, some of you might remember that story. We have covered it a couple of times in Yes, classes. Mataji. Yes, Mataji. Okay. So the part 1 of Brihad Bhagavatamrit was the quest of Narad Muni to find who is the best devotee, or what type of devotees are the best devotees. So from that part 1 of the story, we understand that Braj Gopis or Vraj Bhakti is the best type of devotional service. Madhurya Bhav is the topmost devotional mood. We understand that we should worship in the mood of Brajvadhus. That was established by that story. The part 2 is what we are going to discuss today, is the journey of Gop Kumar. Okay, journey of Gop Kumar. So this is the story in which we will understand what is the topmost. There are many, many lessons in this story, but the main understanding is what is the topmost destination, topmost abode in the spiritual sky. Okay. And this story will give you some lessons on how to get back to Godhead. What is the best way to get back to Godhead? What is the importance of a guru? How spiritual desires elevate us? How with devotional service one loses taste for any material attachments. Okay, you will understand all these points through this story. So, so let's start. So in this story, and I was reading through this Brihad Bhagavatamrit. It's amazing. The details in this of each abode, of each planet are very, very, like, there are very detailed descriptions given of the people that live there. And you are seeing everything from Gop Kumar's eyes, okay, from Gop Kumar's viewpoint. So we don't have time because these are very, very long, very big books. But they're easy to read because they're all in story form. It's not too much philosophy there. It's mostly story, so they're easy to read. But basically, this is how the story goes. So in Mathura district in Govardhan, okay, there was a cowherd boy that was the son of another Gopa or cowherd. So that's why he was called Gop Kumar, because Gopa's son is called Gop Kumar. So a cowherd man's son used to live. His name was Gop Kumar. He used to play with his friends, with other cowherd boys, with other Gopas, and he used to take the cows to the pasture. And he used to, run around and play flute in Vrindavan, in the forest of Vrindavan, and on Govardhan. Now, in that village, in that area where they used to live, there was this very unique personality that used to live. He was a very strange type of man. He would act very strangely. They used to think he may be a madman. But the cowherd boys, Gop Kumar's friends and Gop Kumar, were very gentle, nice kids. So they used to feed him, they used to bring him some yogurt or some milk or something to, just to, because they thought he was homeless and he has no money and he has nobody to take care of him. So they'll just, take care of him a little bit. This man's name was Jayant. Okay.
this saint, or this strange man actually was a saint, and he one day when Gop Kumar brought him some milk and some fruits or something to eat, this man called Jayant, he told Gop Kumar, I'm very pleased by all the services that you have rendered to me over last few years. I want to give you something very, very precious. Okay, something so precious that it's not available easily in all the three worlds. So go take bath in Jamuna, come back to me, and I'll give you something. So Gop Kumar did exactly. You know, he was a very nice, submissive, timid type of boy, and he did not have much knowledge. He did not know too much about the world. So he did as Jayant had asked him. And after he came back from Bath, this man, Jayant, he gave him a mantra. Okay. Now, this is a legit mantra. Okay. This mantra is often given by many gurus and in many sampradayas. And a type of this mantra is also given in ISKCON actually after Gayatri Diksha. This is called Gopal mantra. Okay. This is a 10-syllable mantra called Gopal mantra. It's not chanted whimsically. So it is in ISKCON, it is only chanted after, like as Gopal Gayatri, once it is received from a guru properly. Now, Gop Kumar received this 10-syllable mantra, Gopal mantra, from this man who he now considered his guru. And this man started telling him a little bit of instructions on how to chant this mantra. He was just going to tell him the meaning. He had not told him the meaning much. He had only explained half of it. While discussing this, he suddenly fainted. The man fainted. So, you know, this is this can happen even, you know, sometimes with us, that we are because Vaishnavas can be sometimes so exalted that their behavior may be difficult to interpret. You may ask them something and they may answer something differently. They're in their, you know, in their own world, and they have their own vision sometimes. So it is sometimes difficult to understand their actions. It is said Vaishnavera Kriya Mudra Vigehe na bhujaya, that even the most intelligent people cannot bujhao, or cannot guess, cannot understand the Vaishnav Kriya Mudra, the exalted, elevated Vaishnavas. Their actions cannot be understood sometimes. So why he fainted, we don't know. But anyways, once he gained his consciousness, Gop Kumar was hoping that he will give him rest of the instructions on the rituals, the vidhi vidhan, or the meaning of mantra, but the man actually got up and left. He did not say anything further to Gop Kumar. He just disappeared and was not seen again in Vrindavan. Okay. Now, but Gop Kumar he really loved this mantra, and he decided to start chanting it. And he started chanting according to whatever the rules that Jayant had told him. As he was chanting, he realized over the next few months that he was not very inclined in his previous activities anymore. He did not feel like playing with his friends. He did not feel like taking care of the cows. He was feeling very detached. He was hankering for something more. And in his visions, when he would chant the mantra, like really focus on those 10 syllables, he would start seeing the vision of another cowherd boy. And he really, you know, wanted to go play with this boy. But none of his friends looked like that boy. So he did not know where this boy is. But anyways, he knew that he was longing for something deep, something more. And this life in Vrindavan, this life in Govardhan was not satisfying it anymore. So he left home. As he was walking, he came across a Brahman. Okay. This is a long story, so I'm going to cut it a little short so we can understand the essence of it. He came across a Brahman. Brahman was worshipping Shaligram Shila. Now, Gop Kumar had never seen Shaligram Shila, but he saw that Brahman is offering it something, doing incense and everything. So he asked the Brahman, what is this? And now, those days, people used to be very advanced. They used to know what Shaligram Shila is. They used to know that Shaligram Shila is Supreme Personality of Godhead. So Brahman said, you don't know what is this? This is Supreme Personality of Godhead. This is the Supreme Person, Lord Hari. So, Gop Kumar was suddenly very worshipful mood. He started praying also. But then Brahman finished his worship. He put the Shila in his potli, not a potli, in a box, in a little box, wrapped up everything and started to leave. And Gop Kumar became very upset. Gop Kumar said, how are you treating the Supreme Person? You put him in a box. He will suffocate there. He needs some air, how can you treat him like that?
So, he had developed sentiments for Lord by now. He is developing some sentiments, but he does not know the tattva, the philosophy. He does not understand that Supreme Lord can manifest as this Shila. So he just has these bare sentiments, but without any knowledge or philosophy to go with it. So he's just, crying that, oh, my Lord, Supreme Person is being treated so harshly by this Brahman. So Brahman, and you're giving him just this small little bit of fruit, and so you don't have anything better to give him. So Brahman said, look, my dear boy, I'm a mendicant. I don't have, mendicant means like a sannyasi. I don't have anything else to offer. Whatever I had, I offered, and I can only worship this Shila very, very simply. And this is how we worship. We worship the Shila, then we put it inside a bag or a box. This is how it's done. But if you're attached to very opulent, very royal type of worship of the Lord, then you should go to the king. So he sent him to the capital. Go to the king. And you will see how they have nice temple, nice deities, and how they worship there. So Gop Kumar went to the king. There he was amazed. This was completely wonderful to him. There are deities there, so many devotees there. They're doing arti and kirtan and proper worship, proper paraphernalia, flowers, incense, lamp, everything is going on. So this was satisfying to him. So he started living near that temple and he would just chant. He continued chanting. Remember, he continued chanting that Gopal mantra. He never forgot the Gopal mantra and continued chanting it every day. And another thing is, as he keeps going further, he still does not give up his dress code. He's always in that cowherd form only. He likes that. He's very attached to that dress. And now he gets visions of this person when he chants the Gopal mantra. He sees that person also looks like him, so he doesn't want to change his dress code. He wants to keep this form that he has been given. Anyways, he started serving near the temple. Now, by some arrangement, it happened that he came into the notice of the king. And king did not have any kids, any son. So king adopted this Gop Kumar as his son, and in due time, king died, and they made Gop Kumar the king. Now he became the king. He increased the services. He started doing more services, started engaging his kingdom in the service of the Lord and better temple and more opulent service, worships and all. But he noticed that in this city, there were these brahmanas who were very like ritualistic, like those some smart brahmanas who like chua chat and treating people differently. And if somebody has touched the prasad, then they will not accept it. And or if somebody made the prasad, they will not offer it to the deity. Or if some prasad gets a little bit stale, then they throw it away. So he did not like it. He did not like the mistreatment of the prasadam there. He was not very happy about this. So one day, some people came to visit his kingdom, and they were talking about this place where prasadam is available in abundance. It's treated very reverentially, and they described this place as Sri Kshetra Dham, okay, Jagannath Puri Dham, and they told the king all about it. So Gop Kumar, who was the king, he was, and anyways, he was not very attached to his royal throne or anything. He gave up the kingdom. He said, I'm going to go to Jagannath Puri. So he gave the kingdom to somebody else. He was not very attached to this type of material opulence. He was just attached to the chanting of the Gopal mantra. So he went to Jagannath Puri. Actually, I had a couple of slides. This is Brihad Bhagavatamrit, of course. This is the Jayant that's giving Gopal mantra to this cowherd boy, Gop Kumar. And this is when he became king, okay? This is when he became king and he heard about Jagannath Puri Dham. And then he went to Jagannath Puri. Now Jagannath, when he saw, he was, and he ate prasadam there. He was so completely mesmerized, overwhelmed with how Jagannath ji was being, worshipped there. Not only opulent worship, but also prasadam was wonderful. Even they said even if a dog eats from the same plate as Brahman, even then the prasadam is not spoiled. Even then it is fit to be eaten by the Brahman. So that was the glory of Jagannath Puri's prasadam. So he was in complete bliss here. He did not miss his throne or anything. He would just attend festivals, he would eat prasad, he would visit temples, he would do services, and he was completely blissful. Like it said about Vaishnavas, Vishwam Purnam Sukhayate. Like if they are engaged in devotional service, they're completely in bliss.
Now one day, and now Gop Kumar was so allegiant to Jagannath Puri, to Jagannath Ji service, and this scene shows that when he saw them first time, he started running towards them because he wanted to embrace them, but he did not know about the priest there, the pandas there, who came after him with a stick. This is that painting depicting as a famous scene. Actually, I had we don't have time, but I had underlined many verses, which when you hear these verses from the book, actually it's very, very nice. So anyways, in Jagannath Puri, what happened was he came into very much prominence because he was such a nice boy serving nicely. And in Jagannath Puri, the king is not chosen by the family inheritance, right? It's not, the throne is not given just to the prince or anything. In fact, it is by the qualification. So when the Gajpati is the king of Jagannath Puri. So that's the title of Jagannath Puri's king. They're called Gajpati. So when Gajpati died, it was decided that let's make this boy the king because he has previous experience of being a king. And secondly, he's not very attached to the throne. Look how he left that throne and he came here and to just serve Jagannath Ji. That is how much his allegiance is to Jagannath Ji. So let's make him the king. He'll be completely aloof from material attachments and he will serve nicely. So in this way, he became Gajpati. But as he was living there, he started living there. He wanted to do more, intimate and direct service to the Lord. Plus, he kept getting the visions of this cowherd boy in his while chanting the Gopal mantra that he was not able to shake. So even living in Jagannath Puri, he was not completely satisfied. And then in Jagannath Puri, I don't know if you know that it's visited by demigods and by people from heavenly planets. There is Swarg Dwar there from which they enter into Jagannath Puri. There is a whole, like it's called parking area for demigods, where they park their carriages and all, and then they enter into Jagannath Puri. So one day, some citizens of Swargaloka came. Okay. And they started talking to Gop Kumar. And when he heard about Swargalok, or you can say Indralok, where King Indra is the king, he was very inspired by King Indra's service, because they said that Lord himself comes to receive worship and offerings from Indra and the other demigods. Do you know which form does king come in? Can you hear me? Did my connection go out? माता जी थोड़ा फ्रीज हो गए थे पहले. Acha, I was asking, few do seconds. you know which form does Lord come to in Indralok to accept offerings from demigods and Indra? Does anyone know the form of the Lord that he comes in? It's called Upendra form. So he comes to receive worship from the demigods that are under the guidance of King Indra. So he thought, okay, I will be able to directly serve the Lord. So let's go to Indralok. He was just thinking about it. But somehow or the other, these desires of his were getting fulfilled. So even the material desires or spiritual desires that he had, they were getting fulfilled. So somehow he reached Indralok. He just had to think and he reached Indralok. In Indralok, eventually, okay, again, just to shorten the story, just to expedite the story, eventually, as you know, Indra sometimes does some offenses. He did some offenses and he lost his position and he ran away. Okay. So then again, what do you think happened? Gop Kumar became Indra. So he keeps getting these, somehow his material desires are, maybe he has some desires inside of opulence and to enjoy the material world, whatever those desires are, they are getting fulfilled. Plus his spiritual desires are also getting fulfilled. So he became Indra. So now he is ruling Indralok with all these demigods and he's offering worship to Upendra. The Lord comes and they offer so many Shaligram Shilas they worship, and so much royalty there is, so much opulence there is. Then one day, but he still, remember that every time when this happens, when he goes further and further, he's feeling a little bit dissatisfied. He's not completely satisfied. There is a void meaning koi kami hai. Kuch dil mein kuch kami hai. There is a void in his heart that is not getting fulfilled. There is some space in his heart which is not fulfilled by any of this opulence, any of this
this reverential worship, none of this is satisfying him completely. So one day, some brilliant personalities came from higher planets. Okay, these personalities were sages of Maharlok. So if you look at I have this map of this is material world, of course. So you can see this is Bhulok or Earth planet. Okay, he went to Indralok, which is Swargalok. You can see it is from here starts the heavenly planets where 33 million demigods live. Maharloka. So now these brilliant personalities that came to visit Swargalok were from the planet called Maharlok. Okay, all these planets are in material world only. So this is, if you see, this is the I don't know how to go back. If you see, this is the complete map of the material and spiritual world. So here, down here is the material world, and up here is the spiritual world. Okay, in between, you can see that if I enlarge it, you will see that there is Shiva's planet called Kailash. So this is Shivlok or Kailash. And then there is Brahma Jyoti, which is outside the material world. And then, of course, this is the one universe where we can see, and that these are the coverings of the universe. Can you see the coverings? Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, ego. These are the coverings of the universe. So there is a universe, all these planets inside, the covering of the universe. Outside there is Karana ocean, in which Karanodakshaya Vishnu lays, Brahma Jyoti, and then this is the spiritual world. In between is Kailash or Shivlok, and up here is Vaikuntha, and then we'll go further. We'll do it in a few minutes. But basically, there are some brilliant personalities came from Swargalok, and these were the saints or tapasvis from Maharlok. Okay, so like all these wonderful sages that we hear about, like Bhrigu, Pulastya, Pulaha, all these rishis, they live on Maharlok. Okay, there these sages engage in fire sacrifices. So there mostly fire sacrifices happen, and Lord appears to them through the fire sacrifice. And so he thought, okay, wow, maybe if I go to Maharlok, this gap that I'm feeling in my heart will be satisfied. So of course, as soon as he thinks, he's transported to Maharlok. Okay. Also, one more thing. No, yeah, so that's it. So then he went to Maharlok, and he started seeing all these sacrifices being happening there. The sages told him, we can initiate into becoming one of the saints like us. Would you like to accept that and start doing fire sacrifices and all? But you don't have to chant the Gopal mantra anymore. For fire sacrifices, we chant different types of hymns and mantras. Now he was very attached to Gopal mantra. So he said, no, I will not stop chanting this mantra. This was given to me by my guru. And I don't want to do fire sacrifices. Can I just spend some more time here and decide if I want to do this? Meanwhile, suddenly in Maharloka, they started feeling some heat, like as if it was becoming very hot. The reason is, as you know, when we go up and up on the planets, the time expands. So the time in the lower planets has passed very quickly. While he has gone up to these planets, the time below has passed very quickly, and time for devastation has come. Okay. In that devastation, there was fire in the lower planets, and the heat was rising up to the Maharlok. So the people of Maharlok said, now we have to move to, whenever this happens, we have to move to the higher planet. As you can see on this chart, the higher planet is Janalok, where the Saptarishis live. Janalok. Okay. We have to go to Janalok. So let's all go to Janalok. So they all went to, and they took Gop Kumar with him, and they went to Janalok. So in Janalok, the primary form of worship is by meditation, by dhyan. And Lord appears to different sages in different forms according to their allegiance through meditation, through dhyan. Again, Gop Kumar did not stop chanting the names. He kept on with the Gopal mantra. And somehow or the other, one day some people from Tapalok came. Can you think of anybody that lives on Tapalok? Some very famous personalities. Who lives on Tapalok? Can anybody guess? The 4 Kumaras. So one day 4 Kumaras came to visit Janalok.
And 4 Kumaras told Gop Kumar that, why don't you come to us with Tapolok? Maybe you will like it better there. Because, every time he's not feeling it. Something is missing. A piece of puzzle is missing. He's not fully satisfied. So he said, okay, I'll go to Tapolok. So he go to Tapolok. Here, Lord appears as Paramatma. Here in the Paramatma form, Lord is worshipped. Okay, so this is mostly like Gyanis and also in Tapolok, like 4 Kumaras are Gyanis. So this is Tapolok. Finally, then one day, Brahmaji came to Tapalok and he decided to go to Satyalok, which is Brahmalok, which is Brahmaji's planet. So you can see the topmost destination in the material world is Brahmalok. So he went to Brahmalok. So here, now what do you think? One day, Brahmaji was, Brahmaji is basically sitting in this Garbhodak ocean, right? He comes from the navel of Garbhodaksha Vishnu and he's surrounded by this Garbhodak water. One day, Brahmaji somehow touched the Garbhodak water and offended some aquatic in the Garbhodak ocean, and that aquatic was like a demon, and he started chasing Brahmaji. So Brahmaji had to leave the Brahmalok and ran away. So now what do you think? Brahmaji left, so the position of Brahmaji was open. So who became Brahma? The Gop Kumar became Brahma. So somehow he's going through everything. He's become king of Jagannath Puri, king of another city. He has become Indra, and now he's finally become Brahma also. So when he was made Brahma again, he started engaging everyone, and he wanted pure devotional service. He wanted to everyone to chant Gopal mantra. People were not accepting the Gopal mantra. They had their own ways of doing things. And he realized that these people in Brahma Loka were actually, they were not pure devotees. They were Sakam Bhaktas. They were doing various activities for fruitive results, to fulfill their desires and wishes. Everyone there was Sakam Bhakta. So he was again not very satisfied there. Now here it is described that he was, I can't remember who, I think he received instruction from Lord Vishnu in a dream, something like that, where they told him that if you really want to be fulfilled and whatever you're looking for, you can only achieve that through Vrindavan. Your original position where you were as a child, you need to go back to Vrindavan. Because what you're looking for can only be made possible through Vrindavan. So go back to Vrindavan and keep chanting. Don't give up chanting and go back to Vrindavan. So he went back to the Bhulok or Earth planet. So after going all this way up, he traveled all this way up to all through the material planets to the highest planet that's possible, and came back again to the Bhulok in Vrindavan Dham. Now, once he came back to Vrindavan, of course, everything is changed. Many kalpas have passed, right? Many yugas and kalpas have passed. And so he saw that even though everything is different in the world, Vrindavan is still the same. And in Vrindavan, who do you think he met again? He met his Guru again. And this time, the Guru gave him the complete mantra, the complete instructions or the meaning of the mantra. And he told him that keep chanting sincerely, and whatever is the longing in your heart will be fulfilled by chanting this mantra. And he left again. So in this way, this time he chanted more sincerely. Before he was chanting, but he did not know the meaning and he did not know what was going on. Now he knows the meaning. He understands that the deity that he's seeing, the person that he's seeing in his visions while chanting the mantra is actually Sri Madan Gopal. So he understood that through the meaning of the mantra, that when you meditate on this mantra is meant to please Madan Gopal. And that's his worshipable deity. So this much he understood. It's a bluish black complexion, the one holding flute like him, who wears cowboy clothes like him. This is Sri Madan Gopal. So he started chanting very sincerely in Vrindavan and kept on meditating on the Sri Madan Gopal. Eventually, he received a spiritual body. And now understand what happens. This is very interesting. Is everybody following the story so far? It's very long, winding story. Yes, Mataji. Everyone on the same page? Please let me know. Yes, Mataji. Okay. So now when he received the spiritual body, he ascended through the material. Ascended matlab upar ja rahe hain. Material world mein upar ja rahe hain. So this time he did not have to cross each of these
planets step by step. He very quickly passed them. In a blink of an eye, he passed all these 6 lokas very quickly. And he reached the layers of the universe, जो इस अंडाकार अंडा like ब्रह्मांड की, egg like ब्रह्मांड की जो layers हैं, he reached the layers, the covering of the universe. So these he passed very quickly, which he was going step by step before. Now he passed quickly, and now he reached the layers of the universe. Now with his body, he started crossing the layers of this universe. First came Earth. I don't know if you can appreciate, but the Earth is the first layer. If some of you have read Bhagavatam or have some understanding of this, we understand there are 8 elements, 5 gross and 3 subtle elements. Do we know that? 5 gross elements, earth, water, fire, air, ether, and 3 subtle elements, mind, intelligence, and ego. Our body is made of these gross and subtle elements, gross and subtle body, right? This much we know. Another point to understand it, some of you may know this point, is that the innermost layer is earth, okay? The innermost layer is the grossest layer. Grossest matlab, इसमें इस लेयर में बाकी की सारी layers भी बाकी के सारे elements भी होते हैं. You understand? All the other elements are also there. Like earth will have water in it, fire in it, air in it, ether in it. Like that. So, it is very thick layer, basically, you can say. And as you go further, the next layer starts losing its thickness and starts becoming more and more subtle or transparent, you can say. So for example, water will not have earth in it, but water will have other things in it. So water is still thicker than fire, air, ether. Then next comes fire. Fire has air and ether in it. Air has ether in it. Ether is the most transparent, you can say, most subtle, thinnest layer, you can say. So in this way, the thickest is inside, and then it becomes thin and thin as you go further away. So he started piercing through these layers. So first layer he pierced was earth. When he was going through earth, he saw that here Mother Earth, Bhumi Devi, was worshipping who? Who does Bhumi Devi worship? Who do you think she would worship? Who saved Bhumi Devi? In a recent festival, I'll give you a hint. In a recent festival, we discussed that pastime very briefly, where Mother Earth was saved by somebody. That's the personality she worships. Who knows? Vishnu. Yeah, Vishnu, but which form? Okay. All are worshipping Vishnu only, but which form is what I meant. Varaha. Yes, Varaha, right? Because Varahadev lifted earth from the ocean. So so Bhumi, Mother Earth, was worshipping Varahadev. So as he's crossing, you will see the different personalities. All these are personified. All these are persons. In our Vedic literature, they're all persons, all these elements. Earth, water is also a person, water personified. Fire, Agni Dev is a person. Air, Vayu Dev is a person. Like that, they're all personalities. And they all have a worshipable deity that they worship. And you will see that each personality will try to keep Gop Kumar in that realm. They'll say, why don't you stay here? I'll help you. I'll give you all kinds of opulences. तो उनको बहुत सारे प्रलोभन देंगे वो कि मैं तुम्हें ये दूंगा, वो दूंगा, यहीं रह जाओ. So Mother Earth also said, she begged him to stay, but he was very sure, no, this is not where I want to stay. He just kept on going. Next, he went to water. Water was worshipping whom? He was worshipping Matsya form of the Lord. Fire was worshipping Surya. Okay. Air was worshipping Pradyumna. Ether, air हो गए वायुदेव. Ether was worshipping Aniruddha. ऐसे मुझे सबका एकदम exactly पता नहीं है. False ego, the last layer, was worshipping Sankarshan, and the other layers, intelligence, mind, the Mahattattvas, they were worshipping Vasudev. So like that, they were all worshipping a certain deity. The point is, they were all worshipping a certain deity. And each was trying to stop him, but he kept declining all enticements. He was fixed on the mantra, and he kept on declining any offer to stay in that particular realm or zone, layer. Lastly, he came to the last, at the end, he came to here, somewhere here, he came to
the deity of Prakriti Devi, Mahamaya, which is because she was guarding at the end of the universe any soul that is trying to leave. She's trying to keep him inside the universe. This is Mahamaya. This is the inferior energy of the Lord, Prakriti Devi. So initially he was very excited because he saw everything was dark blue. So he thought maybe this is where I'll find that bluish, blackish Sri Madan Gopal. But he realized that this was actually Prakriti Devi's realm. And she was worshipping who? She was worshipping Srimati Mohini Murti. So she is worshipping Mohini Murti. She also offered him many things. She said, I'll give you yogic powers, mystic powers, siddhis and all this if you stay here. Anyways, he declined and kept going. Now next, what will come? So next will come, next will come, what will come? What do you think? When we cross the material world, what comes after? Brahma Jyoti. Sorry, Brahma Jyoti. So now he's in this area, in the Brahma Jyoti. So in this bright light, as he was crossing, he crossed the Brahma Jyoti, and he's in this area, somewhere between Shivlok and Brahma Jyoti. He's wandering around, he's walking around. When he walked over to Shivlok, there was a lot of like smoke, and धुआं था बहुत ज़्यादा, smoke थी, a lot of smoke there. So through the smoke, he heard suddenly some bells ringing, some music coming, and some people that were chanting loudly. And he started walking towards them. And through the fog, it is described, through the fog, a very beautiful personality was coming. And that personality was riding on a bull, okay, a unique person. Let me read some verses. He said, I saw someone riding on a bull, a unique person arriving from a higher region. He was three-eyed, white. I'm reading directly from the verses. He was three-eyed, white like camphor, dressed only by the sky, exquisitely beautiful person, carrying a trident and bore the half moon on his head, his matted locks brilliantly adorned by the Ganga. His body was smeared with ashes and graced by a charming garland of bones. Sitting on his lap was a woman of fair complexion, affectionately serving him. Then there are many other things. Many followers attended him. They were so attractive. Their attractive forms and conduct befitted his service. So I thought to myself, who is this, accompanied by such an entourage? He looks more powerful than anyone in the material world that I have seen so far, more excellent than all liberated souls that I have met so far. Yet he seems to violate the rules of civilized behavior. So he's saying many, many things. And then I was filled with joy. My mind was overcome by supreme ecstasy by seeing him. I paid obeisances to him and those who were with him, and he gave me a very compassionate glance. And you know who was one of his followers? He asked him, who is this personality? So I just gave you a little taste of the verses. Are so beautiful, and they're in a very simple to read verses. So the person that was accompanying him was Nandishwar. Nandishwar, one of the follower of Lord Shiva. He laughed. Nandishwar laughed and said to me, "Oh cowherd boy, you are a devoted worshipper of Gopal. Don't you recognize Lord Shiva, the Lord of the universe?" So he's the giver of material enjoyment and liberation. So like that, the verses continue. So basically he came across Lord Shiva himself. So now a wonderful conversation happens between Lord Shiva, Ganesha, and Gopkumar. Okay, these personalities are talking, and these personalities, they start describing Vaikuntha Loka to Gopkumar. So he says, so ultimately, after a very long conversation, Lord Shiva tells Gopkumar this: you have seen all the material planets. You have crossed through all the piercings of the universe. You have traveled Brahma Jyoti and have come to my planet of Kailash Lok. But I instruct you now that the thing you're looking for, the person you're looking for, can only be achieved by going back to your hometown of Vrindavan. So go back to Vrindavan. Lord Shiva gave him direct instruction. And he told him many, many things about pure devotional service, about separation from Lord. He described Vaikuntha planet. So does Ganesha. Okay, so does Ganesha. So anyways, he went back to Vrindavan because that was the instruction of Shiva.
Now he is very charged because he has seen this wonderful personality Shiva, who has given him very lengthy discourse on pure devotional service, and he has described Vaikuntha to him. So now Gop Kumar wants to go to Vaikuntha. Okay, so now, okay, I think Shravani Mataji left, so I'll speak and switch to Hindi again. So अब उसको फिर से वैकुंठा जाने, उसको वैकुंठा जाना है. अब वो बिल्कुल प्रेमा भक्ति में लीन है, अब वो विरहा में लीन है. अब उसको पता चल गया है कि सच में जो वो कुछ फील कर रहा है, देयर इज समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा है जो अब उसको मिलेगा कभी. तो वो उसमें बिल्कुल कंप्लीटली फोकस होके अपना गोपाल मंत्र चैंट करता है. फिर एक दिन एक प्लेन आया फ्रॉम वैकुंठा. ओके, और वैकुंठा वाले वो प्लेन में उसको बैठाकर वो लोग ले गए. ये प्लेन आया वैकुंठा. ये actually when he was with Shiva and Ganesha and Mother Parvati, he did get darshan of the Vishnu Murti forms also there. But anyways, one day these Vishnu Murtis came and they took him to Vaikuntha. They took him to the doors of Vaikuntha and told him to wait there. कि यहाँ पे वेट करो, हम देखते हैं कि तुम अंदर जा सकते हो कि नहीं. जब वो वहां पे वेट कर रहा था तो उसको ये 400 विष्णु दिखाई दिए. तो वो एकदम से भागा, उनको प्रेयर्स ऑफर करने लगा. तो वो जो पर्सन थे वो एकदम से रुक गए. अरे बाबा क्या बोल रहे हो, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं विष्णु नहीं हूँ, क्या बोल रहे हो, मैं तो उनका सेवक का भी सेवक हूँ. तुम क्या मुझे विष्णु की तरह कैसे पूछ सकते हो. मैं तो सिर्फ हम सब एक जैसे दिखते हैं यहाँ पर, हम सभी की विष्णु मूर्ति है, 400 फॉर्म है हमारी, लेकिन मैं उनका दास हूँ, मैं विष्णु नहीं हूँ, मैं नारायण नहीं हूँ. तो इस तरीके से वो और भी कई बार कंफ्यूज हुआ. जब वो अंदर गया तो कई बार ये बहुत वंडरफुल पेंटिंग्स हैं. अल्टीमेटली ही वाज टेकन टू पूरा इनर चेम्बर्स में ऑफ लॉर्ड हरि, ऑफ नारायण. तो ये 4 आर्म नारायण फॉर्म देखी उसने, जहां पर इतनी लक्ष्मीज उनकी सेवा करती हैं. बहुत ऑपुलेंट तरीके से उनकी वर्शिप हो रही थी वहां पे. तरह तरह के चीजें थी उनके लिए, है ना. इतने सारे फूल, इतना बड़ा ऊंचे थ्रोन पे बैठे थे, बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारे कीर्तन चल रहा था. बहुत ऐसे बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही अच्छा सीन था. तो वो भागा नारायण को, क्योंकि देखा ये तो यही है ब्लूइश ब्लैकिश कम्प्लेक्शन वाले. उनकी तरफ भागा उनको एम्ब्रेस करने के लिए. तो उनको लोगों ने रोक दिया. अरे क्या कर रहे हो, भगवान को दूर से ऐसे पूछते हैं और उनके लिए मंत्र होते हैं, वो मंत्र ऑफर करते हैं. तो तुम यहाँ पे रहो. और नारायण ने उनसे बात की. अच्छा, नारायण का बहुत ही अच्छा इसमें डिस्क्रिप्शन आता है. वो बोलते हैं गोप कुमार को कि तुम इतने सालों तक कहाँ थे, मैं तुम्हारी वेट कर रहा था, तुम अब जाके लौटे हो. नारायण बोलते हैं गोप कुमार को कि तुम फाइनली आ गए, अब कहीं मत जाना, अब यहीं रहो. नारायण उसको बोलते हैं. तो वो वहां पे रहने लग जाता है. अब वो देखता है कि मैं यहाँ पे काफी टाइम यहाँ पे रहता है, लेकिन फिर उसको अपना गोपाल मंत्र चैंट करता है. उसको दूसरे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे अलग मंत्र होते हैं, जो भगवान की वर्शिप होती है अलग तरीके से होती है, तुम ऐसा, और तुम हमारे जैसा 4 आर्म्ड फॉर्म क्यों नहीं लेते. तो उसने एक्चुअली ये वरदान ले लिया था. मुझे याद नहीं आ रहा किस स्टेप पे, उसने किसी एक स्टेप पे वरदान ले लिया था कि मेरी बॉडी चेंज नहीं हो, मुझे इसी तरीके के कपड़ों में और इसी फॉर्म में रहना है. उसने विष्णु मूर्ति फॉर्म नहीं लिया. तो वो अपने इसी रूप में रहा और इन्हीं कपड़ों में, और अपना गोपाल मंत्र चैंट करता रहा. अब एक दिन नारद मुनि आए. तो इसमें लिखा है, जैसे लिखा है, I couldn't discern the cause of that feeling. My heart was not full. I had received this transcendental mantra, but I was disturbed that I was going to forget the lotus feet of Shriman Madan Gopal, and I will forget his pastimes. क्योंकि अब उसको और भी चीजें दिखाई देती थी, ना सिर्फ उनका रूप बल्कि उनके pastimes भी दिखाई देते थे. So I'll forget his attractive features अगर मैं यहाँ पे बहुत देर रहा. तो इस एनवायरमेंट में इतनी ऑपुलेंस है, यहाँ पर इतनी रॉयल्टी है. मेरे जो मदन गोपाल हैं वो तो ऐसे नहीं है, वो तो इतनी दूर दूर नहीं रहते, वो तो गले लगते हैं, खाना खिलाते हैं हाथ से, भागते हैं, तंग करते हैं, फ्लूट बजाते हैं मेरी तरह. और उसने यहाँ पर फ्लूट बजाने की भी सेवा ली. उसने नारायण को बोला कि मुझे फ्लूट बजाने की सेवा दो. तो फ्लूट बजाता था, लेकिन दूसरे विष्णु मूर्ति डिवोटीज को ये पसंद नहीं आता था कि ये इस तरीके की वर्शिप हम नहीं करते. ये मुरलीवाद, ये वेणुवाद यहाँ पे नहीं चलता इतना. नारायण के लोक में वैकुंठनाथ के सामने इस तरीके से नहीं बिहेव करते, तुम बहुत फ्री हो उनके सामने. तो एनीवेज उसने कहा कि फिर एक दिन उसको मिलने नारद मुनि आए.
तो उसने नारद मुनि को बोला, अपना हार्ट शेयर किया। नारद मुनि उसके हार्ट को समझते थे, उन्होंने उसको बहुत लंबा अच्छे से सिखाया, समझाया, और उन्होंने उसको बोला कि तुम ऐसा करो, तुम आगे जाओ, शायद तुम्हें आगे जाने पे तुम्हारे दिल की जो डिजायर्स हैं, जो वो पूरी हो सके, तुम्हारी मनोवांछा। तो उन्होंने कहा आगे जाओगे तो आगे धाम आएगा, भगवान का एक धाम है, उसको अयोध्या बोलते हैं, अयोध्या जाओ। तो ऐसे करके वो अयोध्या चला गया। अब मैं इसमें ज्यादा नहीं जाती, पर अयोध्या की पूरी डिस्क्रिप्शन है बृहद भागवतामृत में, कैसे हनुमान जी हैं, कैसे वो उनसे बातें करता है, वानर हैं, सारी इसमें डिस्क्रिप्शन आती है। ठीक है, तो ये अयोध्या का सीन है। अम, उसके बाद ओके, ये तो हम आगे निकल गए। अयोध्या के बाद वो आगे जाता है द्वारका। अब द्वारका में जाता है वो जब, तो द्वारका में उसको ये देख के खुश होता है कि एटलीस्ट कृष्णा टू हैंडेड फॉर्म तो है ना, लॉर्ड राम भी कृष्णा भी एटलीस्ट टू हैंडेड तो हैं। तो उसको ये बहुत अच्छा लगता है, गले लगते हैं, है ना, तो उसको अच्छा लगता है। वहां द्वारका में उसकी कॉन्वर्सेशन होती है उद्धव जी और नारद जी से दोबारा, और वो दोनों उससे बात करते हैं। अब नारद मुनि उसको कहते हैं कि पता नहीं तुम्हारे मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तुम्हारा दिल कहीं पे भी नहीं लगता, तुम्हारे दिल में कुछ तो भी है जो पूरा नहीं होता, क्यों नहीं हो रहा मुझे समझ नहीं आ रही, शायद तुम्हें वही श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम जाके सेवा करनी चाहिए जगन्नाथ जी की। तो उद्धव जी उनको रोक देते हैं। उद्धव जी कहते हैं नहीं, उद्धव और नारद मुनि का कॉन्वर्सेशन है विद गोप कुमार। उद्धव जी रोक देते हैं। उद्धव जी कहते हैं नहीं नारद, नहीं, इसको जगन्नाथपुरी नहीं जाना चाहिए, इसको कहाँ जाना चाहिए, हु नोज? वृंदावन। इसको वृंदावन जाना चाहिए, क्योंकि अब ये सारे मटेरियल प्लैनेट्स देख चुका है, ये यूनिवर्स की सारी लेयर्स देख चुका है, ये ब्रह्म ज्योति, शिवलोक, वैकुंठा, अयोध्या और द्वारका भी देख चुका है। अब इसको जहां जाना है वो जगह की प्राप्ति तो सिर्फ वृंदावन से ही हो सकती है। इसको स्पिरिचुअल वृंदावन जाना है, इसको कहाँ जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है। गोलोक वृंदावन का रास्ता इन प्लैनेट से नहीं जाता, गोलोक वृंदावन का डायरेक्ट रास्ता भौम वृंदावन से जाता है। तो आपको वहीं से ही ट्रेन पकड़नी होगी गोलोक वृंदावन की, और कोई रास्ता नहीं है। तो आप वापस वृंदावन जाओ, बैक टू स्क्वायर वन। तो इसकी सांप सीढ़ी चल रही है जैसे हम सांप सीढ़ी खेलते थे ना, स्नेक्स एंड लैडर्स, वापस नीचे, तो वो वापस वृंदावन। अब तो वो बिल्कुल उसमें बिल्कुल मगन हो गया है कृष्णा भक्ति में। वो हे गोविंद हे गोपाल कीर्तन करता है सारा दिन। उसको कृष्णा दिखाई देते हैं, उसको उसको जो वो मदन गोपाल का रूप है, पहले सिर्फ सिर्फ फॉर्म दिखती थी थोड़ी थोड़ी, फिर धीरे धीरे पास टाइम्स दिखने लगे, है ना, उनका। अब उसको वो सच में ऐसे दिखता है, सामने दिखते हैं। एक दिन उसको कृष्ण उसको दिखाई दिए वो ऑन द बैंक्स ऑफ जमुना, तो उनके पीछे भागा। जब वो भागा तो एकदम से वो भी भागे और वो डिसअपियर हो गए। एंड ही ऑलमोस्ट कॉट हिम, बट कृष्णा स्लिप्ड अवे एंड ही फेल वेरी हार्ड इनटू जमुना। जमुना में गिरा बहुत जोर से, एंड ही फेंटेड। एज ही फेल इनटू जमुना एंड फेंटेड, व्हेन ही woke up, he was in श्रीधाम गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन की जय। सो वो कहाँ पहुंच गया, गोलोक धाम पहुंच गया। ये इतनी बड़ी जर्नी के बाद अब वो वहां पे पहुंच गया। अब वहां जाके उसने कृष्णा को ढूंढना शुरू किया, ढूंढने लगा कृष्णा को। तो वहां पे बहुत लोग थे। कुछ मैं इसको शॉर्ट में बताती हूँ, इसमें इसकी भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन है, गोलोक वृंदावन की पूरी डिस्क्रिप्शन है। तो फाइनली उसको कुछ लोग मिले, पूछते पाछता गया कि नंद बाबा का घर कहाँ है, नंद बाबा का घर कहाँ है, नंद कुमार कहाँ रहते हैं। पहुंचते पहुंचते नंद बाबा के घर पहुंच गया। वहां पे देखा शाम का समय होने वाला था। तो वो बोलते हैं कि कृष्णा कृष्णा तो गैया चराने गया है अपने दोस्तों के साथ। सुबह से निकला हुआ है, हम कब से वेट करें। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग सारी गोपीज लाइन में खड़े थे जिस रास्ते से उन्होंने आना था। ऐसे सीन डिस्क्राइब्ड है कि ये लिविंग बींग्स तो छोड़ो, जो ट्रीज भी होते हैं, ट्रीज भी उसी डायरेक्शन में बेंड होकर देख रहे थे, जैसे जहां से कृष्णा ने आना है उसी डायरेक्शन में बेंड हुए हुए थे। एनिमल्स इकट्ठे हुए हुए थे उस रोड से जहां से कृष्णा ने वापस आना होता है। तो एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हिम। नंद महाराज, यशोदा मैया, गोपीज, सारे जो एल्डरली गोपास हैं, एनिमल्स, ट्रीज, एवरीबडी वाज वेटिंग, ऑल वर लुकिंग टुवर्ड्स द पास्चर्स कि कब आएंगे कृष्णा। तभी तभी स्वीट साउंड आई, बहुत मेलोडियस साउंड ऑफ फ्लूट आई। और दूर से उन्होंने क्या देखा, गोप कुमार ने क्या देखा कि
जो मदन गोपाल को मैं देखता था वो आ रहे हैं, वो चलते हुए आ रहे हैं, उनका रूप पूरा डिस्क्राइब किया है उसने, पूरा रूप वो डिस्क्राइब करता है कि मुझे अम, मुझे वो दिखाई दिए आते हुए। तो जैसे ही कृष्णा ने गोप कुमार को देखा, अब कृष्णा ने देखा गोप कुमार को, जैसे ही कृष्णा ने गोप कुमार को देखा वो दौड़ने लगे। गोप कुमार इधर से दौड़ रहा है और कृष्णा उधर से दौड़ रहे हैं, गोप कुमार से भी ज्यादा तेज। सबको भूल के, अपनी गैया को भूल गए, अपने गोपास को भूल गए, सबको भूल के जोर से भागने लगे कृष्णा की तरफ। और क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? माय स्वरूप हैज कम। तो इट सीम्स कि गोप कुमार का नाम स्वरूप था। तो बार बार कृष्णा बोल रहे हैं मेरा स्वरूप आ गया, मेरा स्वरूप आ गया। तो वो उनके कोई गोपा फ्रेंड रहे थे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गोप कुमार का नाम स्वरूप था। और वो जब जैसे धरती पे आए इतने समय, अब वो इतने कल्पास आगे पीछे ऊपर नीचे बार बार इधर उधर कर करके फाइनली जब वो पहुंचे तो उनको अपनी ओरिजिनल जो स्वरूप सिद्धि मिल गई और उनका नाम कृष्णा ने उनको बता दिया कि तुम मेरे गोप थे, तुम मेरे काउहर्ड फ्रेंड स्वरूप थे जिनके साथ हम खेलते थे। तो मैं तुम्हारे साथ खेला ही नहीं इतने टाइम से, तुमको हमने कितना मिस किया पता है। I'm trying to find that portion in the book. तो वो बोलते हैं, हाँ, then from a distance I saw him, his charming flute in hand, running quickly. He emerged from amongst his friends and animals. He ran towards me, saying in a sweet voice, "Look, Sridham, here is my dear friend Sarup, the sun who shines on the lotus of your family." तो वो उनकी family का था शायद। Krishna was dressed for the forest. You remember Krishna की कैसे नटवर वपु रूप होता है ना, डांसिंग डांसर की फॉर्म होती है, वनमाला फॉरेस्ट फ्लावर्स होते हैं, his garments, earrings, peacock feather crown were all swaying to and fro. His fragrance was perfuming all directions. His beautiful lotus face blossomed with a playful smile. उनकी आईज बताई हैं, his eyes कैसी थी, स्माइल कैसी थी, ब्यूटी कैसी थी, हैंड्स कैसे थे। फिर he leaped forward and he came close to me, compelled by the affection of his helpless devotee. I fainted in love at seeing him. He caught hold of me by the neck, ऐसे पकड़ लिया, and then suddenly he too fainted and fell on the ground. Both of them fell. जब ये दोनों गिर गए ऐसे फेंट होके, कृष्णा भी और गोप कुमार भी, तो इनको लगा, जो बाकी के लोग थे, कि कहीं ये व्यक्ति, ये गोप कुमार कोई कंसा का तो एजेंट नहीं था, है ना, ये हमारे कृष्णा को इसने कुछ कर दिया कि ये बेहोश हो गए। तो वो डंडा लेके आए उसकी तरफ, लेकिन तब हु केम? लॉर्ड बलभद्रा, लॉर्ड बलराम ने बोला, Lord Balbhadra, Krishna's older brother, quickly arrived, full of fear from some distance. White complexion, arrayed in blue garments, he appeared charming, for he was the same age of Krishna. Lord Balbhadra and Krishna cried for a moment, but then seemed to regain his composure and looked all around. With great care and attention, he made me hold his younger brother by the neck. उन्होंने बोला कि कृष्णा को आराम से पकड़ो. He wiped Krishna's beautiful limbs clean with my hands and made me loudly call out to him. उन्होंने कहा कि अगर कृष्णा को जगाना है तो इनके लिए मंत्रा गाओ जोर से. And then he made me lift Krishna up from the ground. Suddenly Krishna opened his eyes, sealed till then by a flood of tears. Seeing me, he joyfully embraced me and kissed me. But then he looked around and became embarrassed. तो ऐसे बहुत लंबी बहुत अच्छी से डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद भी बहुत, उसके बाद भी लाइक आधी से ज्यादा बुक उसके बाद भी बचती है, क्योंकि कृष्णा के साथ फिर उन्होंने क्या क्या किया। कृष्णा ने उनको अपने घर पे लंच के लिए बुलाया, उनके साथ लंच किया, राधा रानी ने लड्डू बनाए थे, वो लड्डू खाए, बहुत सारी डिस्क्रिप्शन आती है इस तरीके से पूरी उसकी। But I'll just stop here. This was the whole story of Gop Kumar's journey from material world to spiritual world. और ये वो कहानी है जो परीक्षित महाराज ने उत्तरा को सुनाई थी और बाद में जैमिनी ऋषि ने जन्मेजय को सुनाई थी, ठीक है। और इस स्टोरी को हमें सुनाया है सनातन गोस्वामी ने। इसको, ये खत्म होती है एट द एंड विथ about 60 shlokas which are very famous. Some of you may have heard these shlokas are called Bhakti Rasayana. क्योंकि जब जन्मेजय ने ये सब सुन लिया जैमिनी ऋषि से, तो तब भी उनका मन नहीं भरा कि आप कुछ और भी बताओ मुझे कुछ। he says I'll read it. He says, give me some medicinal tonic. मुझे कोई मेडिसिन दो, मुझे कोई टॉनिक दो। He said, okay, look, he says,
Fearing that this narration is about to end, my heart burns with sadness. Please dispense a medicinal tonic by which my heart may again be fully satisfied. तो रसायना क्या होता है? रसायना आयुर्वेद टर्म्स में बोलते हैं किसी एलिक्सर को या किसी टॉनिक को। तो ऐसा बोलते हैं जब हम कोई डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, अक्सर लोग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जाते हैं, है ना, कुछ नहीं खाना, और सिर्फ डिटॉक्स करना इज नॉट इनफ, क्योंकि अगर कोई डिटॉक्स करेगा लेकिन अगर वो कोई न्यूट्रिशन नहीं लेगा इन अ वेरी कंडेंस्ड फॉर्म, कुछ न्यूट्रिशन लेनी पड़ती है, उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं रसायना। एक ऐसा एलिक्सर दिया जाता है जो इमिडिएटली आपके सारे जो अम, अ, आपकी बॉडी को नरिश कर देता है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन से आपकी बॉडी एकदम से वीक हो जाती है ना, इतना सारा इलेक्ट्रोलाइट्स और सब कुछ निकल जाता है, टॉक्सिन्स। तो आपको कुछ टॉनिक चाहिए होता है ताकि आपको बॉडी फिर से रिजुविनेट हो जाए। उस मेडिसिनल टॉनिक या उस एलिक्सर को बोलते हैं रसायना। तो लास्ट में जन्मेजय ने जैमिनी ऋषि से बृहद भागवतामृत के एंड में अबाउट 60 कुछ वर्सेस आती हैं जिनको बोलते हैं भक्ति रसायना, वो सुनाई फिर। तो वो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये जैसे ये डॉक्यूमेंट है, ये भक्ति रसायना वर्सेस ये बृहद भागवतामृत के एंड में आती हैं। ये सुनाया फिर। तो इस तरीके से जन्मेजय वाज देन कंप्लीटली सैटिस्फाइड। ये दिस इज कॉल्ड भक्ति रसायना। तो अल्टीमेटली मतलब इसमें बेसिकली हमें समझने की बात ये थी कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है कि हमें किस मूड में भगवान को वर्शिप करना चाहिए, किस भगवान को वर्शिप करना चाहिए, किस धाम में वर्शिप करना चाहिए, वो हमें बताया है ना। उसके लिए हम क्या बोलते हैं, महाप्रभु ने क्या बोला है? आराध्यो भगवान व्रजेश तनयास तद्धामा वृंदावना रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमा पुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधरा न परा। उसमें उन्होंने बताया है कि आराध्यो भगवान ब्रजेश, जो ब्रज में रहने वाले नंद हैं, नंद कुमार हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश कन्यास, जिनका धाम वृंदावन है, वो आपके आराध्य भगवान है। दैट इज योर वर्शिपेबल डीटी। Okay, so that's why we worship Krishna not in Dwarkadish mood, not in the form of Narayan or Vaikuntanath. We worship in the form of Shyam Sundar, Nand Kumar, Brajendra Nandan, Krishna. So that's how we worship. That's our worshipable deity. आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्या, जिनका धाम, और हमारा गोल क्या है, किस धाम में जाना हमारा गोल है? वृंदावन धाम, तद धामा वृंदावना। और किस मूड में हमें वर्शिप करनी है? जो व्रजवधूस का मूड है, रम्या काचिद उपासना व्रजवधू, व्रजवधू के मूड में वर्शिप करनी है। वो पार्ट 1 ऑफ बृहद भागवतामृत में आता है। और किस ग्रंथ के थ्रू हमें भगवान को अप्रोच करना है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, जो अमल पुराण है, उसके थ्रू हमें कृष्णा को अप्रोच करना है। और ये मत किसका है? महाप्रभु का। तो हमें इस भगवान की वर्शिप करनी है, इस धाम में वर्शिप करनी है। और हमें इस स्टोरी से ये भी पता चलता है कि अगर कोई चैंटिंग करता रहे विद फेथ भगवान के मंत्रा की, तो उसको अपने आप इस मटेरियल वर्ल्ड से डिटैचमेंट हो जाती है। कितने भी उसके सामने एंटाइसमेंट्स आए, अट्रैक्शंस आए, वो उनसे दूर हो सकता है और कंसिस्टेंटली डिवोशनल सर्विस कर सकता है और अपना गोल मिलेगा। एट द एंड गोल विल बी देयर, है ना, गोल विल बी रीच्ड। तो ये जो स्थिति थी गोप कुमार की, जिसमें वो इतने प्लैनेट्स में गया, यही हमारे साथ होता है, पर हमारे साथ मल्टीपल लाइव्स में ऐसा हो रहा है। इसलिए बोलते हैं ना, कभी कोई इंद्रा बना होगा, कभी कोई ब्रह्मा बना होगा, कभी कोई एनिमल बना होगा, कभी कोई राजा कहीं का, कभी कोई बेगर होंगे, कभी कुछ होंगे। यही सब हम करते जा रहे हैं, ब्रह्मांड में हम ऊपर नीचे घूमते जा रहे हैं। लेकिन गोप कुमार was fixed in his devotional service and in chanting of Gopal mantra. It's like he was ascending up only. He was not going down. He was going down only to Vrindavan धाम. और दूसरा में से ये पता चलता है कि इस भगवान के धाम में वृंदावन धाम से ही जाया जा सकता है, मतलब भूलोक से ही जाया जा सकता है, ह्यूमन फॉर्म से ही जाया जा सकता है। कोई डेमीगॉड्स, कोई और हायर प्लैनेट से रास्ता नहीं जाता भगवान के धाम जाने का।
तो इसलिए हमें अपने घर को, अपनी सिटी को, जहाँ पे भी हमें रहते हैं, हम इसको प्रभुपाद ने हमें इंस्ट्रक्शन दी है कि वृंदावन धाम बना दो। एवरीवेयर वेयर यू चैंट लॉर्ड्स मंत्र, दैट विल बिकम वृंदावन धाम इन दिस भूलोक. So your home will become Vrindavan if you're reading Srimad Bhagavatam and chanting the names of the Lord and serving the devotees. So ये कुछ, some lessons. There are many more lessons. Would anyone like to share any realizations or lessons that जो आपको कुछ इसमें से लगा हो? और भी बहुत lessons हैं इसमें. Who would like to share? Has anyone heard this story before? No, Mataji, I had just heard about the Brihad Bhagavatam, but didn't know the details. So it was very, very nice. You presented it very well, Mataji. Enjoyed it. Thank you. I was trying to read the whole thing, लेकिन of course वो हम कभी detail में हम एक-एक करके पढ़ेंगे, एक-एक वर्ष कभी. But I just wanted to give you the journey of Gop Kumar. Yes, Mataji, please share something. Mataji, is this from BBT, the books? Mataji, BBT से नहीं होती. Typically BBT सिर्फ प्रभुपाद की बुक्स ही publish करते हैं. This is Giriraj Publishing. This is गोपी प्रांधन दास's book. और गोपी प्रांधन दास का मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जो श्रीमद् भागवतम के रिमेनिंग कैंटोस थे, जब प्रभुपाद चले गए थे, 10th कैंटो का लास्ट हाफ या 2/3 ऑलमोस्ट, एंड 11th and 12th कैंटो, along with couple other disciples of Prabhupada who were really scholarly in Sanskrit, उन्होंने वो भी किया था और भी लिटरेचर्स को ट्रांसलेट किया है. He also used to live, मैं इनका पीछे से बैक कवर में पढ़ रही हूँ. He also used to live in Govardhan with his wife and son, and he spent the last years of his life in Govardhan. Yeah, he served as an editor for the BBT. He developed an expertise in Sanskrit and served as an editor for BBT. और कुछ माताजी आप शेयर कुछ करेंगे इसमें से? कुछ माताजी और तो बस यही कि importance of chanting. You just can't emphasize enough. Importance of chanting, importance of allegiance to Guru, Guru Nishtha. गुरु निष्ठा बहुत थी उस व्यक्ति की कि इन्होंने मुझे ये मंत्र दिया है और वो करते रहा चैंट. और उसको एक्चुअली मैंने थोड़ा सा कहीं पे मिस किया, शायद उसको गुरु 1-2 बार और मिले थे. उसको गुरु टोटल 2 या 3 बार मिले थे. और दूसरी बात, तो बेस्ट वे टू गो बैक टू गॉड इज चैंटिंग थ्रू इन ह्यूमन फॉर्म थ्रू वृंदावन धाम. और हमारे वर्शिपेबल डीटी मदन गोपाल या ब्रजेंद्र नंदन कृष्णा है, वो हमें पता है. और गोलोक धाम जो है वो टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, इससे हमें ये समझ आता है ना. और अगर कोई मंत्रा करता रहे तो उसका कैसे मटेरियल इंजॉयमेंट के लिए अपने आप टेस्ट खत्म हो जाता है. और एक बात क्या थी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि कृष्णा हमारी वेट कर रहे हैं ईगरली. कृष्णा इज ईगरली, ही इज मोर ईगर फॉर अस टू जॉइन हिम. क्योंकि हमने एक बार पहले भी ये बात डिस्कस की थी, जब हमने वो पर्ल नेकलेस वाली क्लास की थी ना, जब हमने वो वाली वर्स की थी भगवद गीता चैप्टर 7 चैप्टर में से जो वर्स की थी, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव. तो हमने कहा था कि कृष्णा के नेकलेस में से कोई पर्ल मिसिंग है. तो कृष्णा का जो कृष्णा का जो एंटुराज है, जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक कोई फ्रेंड मिसिंग है. और आप लोग सोचो, हम लोग वो फ्रेंड्स हैं, हम लोग कोई सेवा में हमें वहां पे होना चाहिए था और हम उस सेवा में से मिसिंग हैं. तो कितनी बड़ी बात है ये कि क्या पता क्या सेवा थी हमारी जो छोड़ के हम यहाँ पे आए हैं ये सब भोग करने के लिए, और इधर उधर धक्के खा रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं. तो कृष्णा इज ईगरली वेटिंग फॉर अस कि मेरा वो फ्रेंड या मेरा वो जो भी रिलेशन है वो कब आएगा वापस, या राधा रानी की गोपी है, जो भी है आप. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. इसलिए कृष्णा ने इतनी बड़ी भगवत गीता इतने अच्छे से बार बार कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं कि वापस आओ, एक बार आओगे तो वापस नहीं जा पाओगे, वापस नहीं जाने दूंगा, ये वो. तो कितना बार बोलते हैं कि वापस आओ. तो इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं. यस रमेश प्रभु, प्लीज शेयर. Hare Krishna Mataji, very nice depiction of the whole Brihad Bhagavatam. It's really nice. I never read it, I have to admit it. So I saw this book a long time ago, but I didn't get a chance to look at it in deeper way. I think one realization for me is that
staying in Dham is very important also. I know Prabhupada said we can make Vrindavan anywhere and everywhere, and we have to carry Vrindavan in our heart. I mean, but at the same time, like when I heard the story about he had to go back to Vrindavan to come to actual Vrindavan in spiritual Dham. That's like eye opener for me. So I was also thinking, anywhere is fine, but sometimes I feel that Vrindavan is also important. So yeah, just wanted to share that. Yes, Prabhuji, yes, definitely. तो हमारे तो कितने ऐसे सीनियर्स हैं, जैसे मैं सुनती हूँ जब वो बताते हैं कि हम तो अपना कैसे सेविंग्स कर रहे हैं कि वृंदावन में जाके रहेंगे, वानप्रस्थ और मतलब वानप्रस्थ वाला टाइम जब काम छोड़ देंगे तो फिर वृंदावन में जाके रहेंगे. Of course, it may not be possible for all of us, and it's okay. Like, since we are under the shelter of Prabhupada, if we stay and preaching is very important in other places where there are no devotees. So we take guidance from our guru with regards to whether we stay in Dham or continue our services where we are. That is also another thing to remember, to take guidance from Guru. He was getting guidance. Remember that he's getting direct instructions from Narad Muni or Uddhav ji or Shiv ji. They're telling him directly कि अब वहां जाओ. तो हमको भी ऐसे नहीं कि विली निली हम कहीं जाएं. अगर आपके गुरु को ऐसा लगता है, इसलिए गुरु का शेल्टर लेना बहुत जरूरी है. अगर आपके गुरु को ऐसा लगता है कि आप जहाँ पे हो अभी वहीं पे आपको सर्विसेज आप बेस्ट कर सकते हो, so it may be, okay that you continue there, because that is more important than to neglect or defy the instructions of Guru and then nahi main to I don't care, I'm going to Vrindavan. ऐसा भी नहीं होगा. So all this has to be taken in balance. But yes, धाम की importance भी है बहुत ज़्यादा. Thank you for sharing. Thank you. Any other points? Nagarchand Prabhu, Poonam Mataji, want to share something? Or my mom, Nirmala Mataji. Hare Krishna, thank you. This is such a beautiful story, and I think you narrated it very nicely, and a lot of learning points from it. As other devotees already mentioned, importance of Dham, importance of chanting, importance of Guru, and Kevalya Bhakti also is shown over here, that how Gopkumar didn't get deviated from so many other forms, or so many other places. His journey would have stopped if he would have stopped over there or become complacent, but he had Kevalya Bhakti of Krishna, of Madan Mohan Krishna, so he continued to progress. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Nagarchand Prabhu. Actually, it's very gutsy. जैसे आप सोचो, आप वैकुंठा में हो या आपको ये भूमि देवी प्रलोभन दे रही है, they are all enticing you, और आप देख रहे हो इतने सुंदर सुंदर लोग डिस्क्राइब्ड हैं उसमें, इतनी ज्यादा रॉयल्टी, सारे कंफर्ट्स है ना, इतनी सारी फैसिलिटीज, रिसोर्सेज, उनको छोड़ के आगे जाना बहुत मुश्किल होता है. So we see that in this world also, that's why people are not able to take up the path of bhakti even in this world. Forget आगे जाना ऊपर, तो यहाँ पर भी जबकि दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, तब भी नहीं छोड़ पा रहे चीजों को, तब भी उन्हीं चीजों में रमे हुए हैं और भक्ति नहीं ले पा रहे, क्योंकि ये जो कंफर्ट्स हैं, थोड़ा बहुत जो टेस्ट मिल रहा है दुनिया में, उसी टेस्ट के पीछे, like drops of honey that you're licking from the edge of the razor, ऐसा बोलते हैं ना कि ब्लेड के एज पे हनी लगाया और उसको चाट रहे हैं उस एज को. तो ऐसे भी करते हुए भी खुश हैं, लेकिन भक्ति नहीं करेंगे. तो गोप कुमार के लिए कितना मुश्किल रहा होगा, जहाँ पे एक्चुअली भगवान के भी अलग अलग फॉर्म्स दिख रहे हैं, तो he could have easily gotten distracted, deviated. लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अगर आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हो तो आपको पैर उठाना पड़ेगा, इससे पैर उठाओगे तभी तो अगले पे पैर रखोगे ना, लेकिन लोग उस पे से पैर उठाते हुए डरते हैं. तो वो अगले स्टेप पे जाने के लिए पैर उठाना, लीप ऑफ फेथ लेना जरूरी है. तो शुरू में ऐसा लगता है कि उसकी कुछ मटेरियल डिजायर्स रही थी जो पूरी होती जा रही थी, जैसे उसको कभी इंदिरा बन गया, कभी गजपति, कभी ब्रह्मा, कभी कोई और किंग, वो सब डिजायर्स भी पूरी हो रही थी धीरे धीरे. इसलिए हमको ये भी इंस्ट्रक्शन है कि इन दिस वर्ल्ड ओनली मटेरियल डिजायर्स को, डोंट केटर टू मटेरियल डिजायर्स, जस्ट स्पिरिचुअल डिजायर्स ही रखो, ताकि वो सब कंफ्यूजन ना हो कि हमें ये हायर प्लैनेट्स में जाना पड़ जाए या ये चीजें एंजॉय करने के लिए मिल जाएं. Yes, Mataji.
माताजी एक चीज और ये भी मैंने नोट किया कि जब वो तपल थे उन्होंने उनको बोला था कि आप है ना मंत्र यहाँ पर ये वाला मंत्र चेंट नहीं करना है, तुम ये वाला मंत्र ले लो, दूसरे मंत्र ले लो। तो उसने बोला था नहीं मैं अपना मंत्र नहीं बदलूंगा, मैं अपना मंत्र यही गोपाल मंत्र चेंट करूंगा। इसका मतलब ये है कि हमें बार बार इधर उधर लोगों के वो उसमें आकर अपना मंत्र अपना इष्ट नहीं चेंज करना है। हम जहाँ लगे हैं उसी मंत्र को करते रहना है, हम उसी से आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, यस यस माता जी। हाँ, नहीं तो दुनिया में बहुत तरह के पैथ्स हैं, लेकिन लोग इसी में ह्यूमन लाइफ निकल जाएगी डिस्ट्रैक्ट होने में इधर उधर के पैथ्स में। तो ये बात बिल्कुल सही है। एक तो लोग पहले मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कंफ्यूज हो रहे हैं कि भक्ति करें या नहीं करें। फिर जब भक्ति करने लगते हैं उसमें भी कई तरह के पाथ दिख जाते हैं, कई तरह के गुरु। फिर उसमें कंफ्यूज होने लग जाते हैं, ये करूँ वो करूँ। तो किसी भी एक को कम्प्लीटली पकड़ के कम्प्लीटली सरेंडर नहीं कर पाते, उसको होल हार्टेडली फॉलो नहीं कर पाते, तो फिर उनको कुछ भी खास बेनिफिट नहीं मिलता कहीं का भी। सो दैट्स आल्सो गुड पॉइंट। हाँ, तो स्पिरिचुअल पाथ में आके भी उस पे दृढ़ रहना है, फिक्स्ड रहना है। एंड देन या आई थिंक दैट्स इट। और कोई तो एक बात मैं ये बोल रही थी, प्रभु जी बोल रहे थे कि जैसे ये बुक नहीं पढ़ी, सो इट्स ओके प्रभु जी कि अगर नहीं भी पढ़ी अभी, क्योंकि हमें आई थिंक फर्स्ट गोल इज टू रीड प्रभुपाद्स बुक्स। तो अभी हम इसलिए मैंने ये स्टोरी वैसे कवर की है क्योंकि कई बार ये आती है ड्यूरिंग क्लासेस या लेक्चर्स, तो इसलिए मैंने ऐसे क्विक में कवर की है। इसका ये सिर्फ पार्ट 2 था बृहद भागवतामृत का। पार्ट 1 था जो नारद मुनि's क्वेस्ट थी, नारद मुनि's क्वेस्ट टू फाइंड द बेस्ट रिसिपिएंट ऑफ कृष्णा's मर्सी, टॉप मोस्ट रिसिपिएंट ऑफ कृष्णा's मर्सी, जो कृष्णा की कृपा के सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम वो हैं, पात्र हैं, किसको सबसे ज्यादा कृष्णा की कृपा मिलती है। सो दैट क्वेस्ट ऑफ नारद मुनि, दैट जर्नी ऑफ नारद मुनि वाज पार्ट 1, और पार्ट 2 ये था जो गोप कुमार की जर्नी थी। लेकिन अगर पहले प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं, जैसे भागवतम अगर नहीं पढ़ी अभी ठीक से, या भगवद गीता या चैतन्य चरितामृत, तो पहले तो ये 3 बुक्स पे फोकस कर सकते हैं। और जो उनके डिसाइपल्स की या और हैं वो वी कैन कीप देम फॉर लेटर, या फिर बीच बीच में कभी फ्लेवर चेंज करने के लिए रीड कर सकते हैं, बट प्राइम फोकस शुड बी ऑन Prabhupada's books anyways. This was just, that's why this was like a quick session that I just wanted to cover this story. ठीक है, any other realizations or should we stop? Okay, so we'll stop. Thank you everyone for joining. Very, very grateful to each and every one of you. Vancha kaltarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. वैष्णवेभ्यो नमो नमः Gurve Gaur Chandraya Radhikaya चन्द्राय Tatapade राधिकाय Krishnaye ददारे Krishna कृष्णाय Bhaktaya कृष्ण Tatapade. भक्ताय तत्भक्ताय नमः।